Hello, good morning everyone. Good morning. बहुत सकाल सकाल सब आसो. Okay, very good. Welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. I'm your Ashutosh Sir. ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲି UPSC ର ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ PYQ ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ କି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରେ ଗୋଟେ at least one day we'll go for the conceptual discussions. So the very basic objective of bringing such discussion is to highlight the basic conceptual need that required in the examination. But one examination जदि देखिबा OPSC रो लेवल सब UPSC बस सेम concept wise माने पचाउछन तो only to strengthen or concretize your root level concept root level that is the major objective. आउ तापरे भी मो एई जिंसडा हाइलाइट करी कि क्वेश्चंस करबा द्वारा जेमति हमर दीटा सेशन होची क्वेश्चंस करबा द्वारा केमति जनकर माने टारगेट माने ट्रिक्स ता देखो एग्जाम रे ट्रिक्स ता ही मेजर इंपोर्टेंट जोटा कि PYQ आउ तापरे सब्जेक्ट ऊपर ठीक अछि डिटेल ऊपर तो क्लास रे आरंभ हेई छ आगु मु कहि कि ओडिशा सिविल्स रे ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस हैव स्टार्टेड एंड ऑनलाइन बैचेस आल्सो आउ जदि हम देखिबा तापरे आज मु कहि बहुत सारा अनाउंसमेंट सो बिफोर दैट वन आज गोटे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हमें पढिबा दैट इज योर वोल्केनोस राइट वोल्केनोस बेसिकली कोन हो रहबो वोल्केनोस माने हमें कहबा इट इज एन दिस इज एन जदि देखिबा दिस इज एन वोल्केनो राइट वोल्केनो माने कोन तो मैं देखुचो व्हाट यू मीन बाय द वोल्केनो राइट दिस इज इट देखिबा दिस इज एन right, this is volcano, we can say this is volcano, right, this is comes out your lava. So ei bhitar joda jauchi ठीक अछि this is an lava. So how you define that one? Volcano means it is an opening in the earth crust la joda ki mouth कहते ei जिनसटा को mouth कहते आगु मु और कहबी डायग्राम देखि it is an mouth. So let's see the diagram here. Volcano is very important chapter जदि हम देखिया geomorphology under आसी and this has very important significance in understanding बहुत सारा question पचारचंदी को जगह रे को अच्छी your volcanic mountains अच्छी पूरा entire world सब जिनस आज हम डिस्कस करबा right. So you can see here the picture here, this is one volcano रे तमे एठी कोन देखुछो this is जेमति हम आउट के पूर्व एठी मु देखेली तुमको this is an opening mouth ठीक अछि this is an opening or mouth. So exactly এই জায়গার যেটা রহুছে দিস ইজ এন মাউথ তুমি দেখুছো দিস ইজ এ মাউথ রাইট এই যে পার্টটা দেখুছো দিস ইজ योर মাউথ ঠিক আছে মাউথ को কোন कहंती व्हाट वी जनरली कॉल माउथ दैट इज कॉल्ड योर कैटर हैला कैटर तक कहंती CRATER कैटर ठीक আছে सो এই যে देखिबा कैटर कैटर टा को इट इज एन जियोलॉजिकल टर्म बेले हमको सेटा लागे कि नहीं हमें जानि परनु बट इट इज ट्रू कि जियोलॉजिकल टर्म मन रखिबा टिके डिफिकल्ट बट इट इज वेरी एसेंशियल काहे कि हमको एग्जाम रे पास करिवर सो वी हैव टू क्रैक द एग्जाम दैट इज द मेजर ऑब्जेक्टिव. सो एठी तमे देखुछो कि वोल्केनोस हला परे देयर इज समथिंग लावा एगुडा जो बही आसे दिस इज योर लावा मन रख दिस इज योर लावा. सो बेसिक डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा आज मु कहबी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लावा एंड मैग्मा. सी इट इज बेसिकली जदि हमें देखिबा कि lava and magma are both are same lava and magma hala lava and magma they both are same मन रखो lava and magma are both are same कौन कि your molten okay solid molten material माने solid टा molten stage रे अछि हला माने ना it's one kind of semi liquid or we can say as an semi liquid हमें कहि परियो this is one kind of semi liquid ठीक अछि. but magma is always inside the earth जेतले जियोलॉजिकली कोन कोए जेतले inside earth और inside diagram देखिबे गोटे inside जेतले earth रहे ए solid material टा molten solid matter it is called as magma. when it comes outside it is called your lava outside the earth surface right. so inside surface रे this is magma is called inside earth surface right inside earth surface को कहा जाए like these are the very basics and lava है outside ठीक है outside the earth crust आगो कहा जाए lava is called the outside the earth crust right. वर्तमान देखिबा कि को जगह रे केमती अछि गोटे डायग्राम और गोटे एनालिसिस देखिबा. see look at this diagram ए डायग्राम रे हम कोन देखुचंती
this is your this entire diagram. It depicts or shows how a gote kitni lava ta kemdi I mean how a volcano erupts. Volcano generally erupts when there is an there is a fracture in the earth crust. Jitla small gap gote habo, eta earth crust jitla small gap gote habo. This is a plate. If I say this is a plate, right? This is a plate. When there is a rupture, okay, plate re gote rupture hela kon likli rupture or fracture in the plate. Rupture or fracture in plate. Plate re habo. तो सही समय कौन हो यही बाटो इट फाइंड ए वे टू एस्केप हैला magma finds a way कौन लिखली magma finds a way to escape माने बाहर को इठू बाहर exactly same thing happens हैला गोटे पछर जतले बहुत बड़ा गोटे फोर्स अप्लाई हुए देयर इज ए रप्चर हुए फ्रैक्चर तो एटी तमे कोन देखुछो magma chamber लिखा है magma chamber माने दिस इज द जोन ऑफ astrosphere मु पढेबी आगु काहरी बडी डिस्कशंस करबी magma chamber अर्थ रो इंटीरियर ऊपर हैला सेटा भी डिस्कस करबा तो एटी magma टा कोन हला ए जो ओपनिंग हला दिस इज एन ओपनिंग गैप एटी हला तमरो गैप ठीक अछि गैप और फ्रैक्चर गैप और फ्रैक्चर ए वटु बाहर magma सो magma जतले बाहर को आसी it deposited as the flowing lava it देखुछो volcanic lava it they get accumulated ठीक अछि सो एटी कोन लिखले flowing lava magma हला inside जोटा कि हला this is nothing but your magma chamber this is nothing but your asthenosphere please note it down जेतले मो क्लास रे बसछो खाता पेन नै के बसबो गोटे एटलास नै के बसबो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू अंडरस्टैंडिंग मन रखो खाली कांसेप्ट क्लैरिटी पई एटा बहुत जरूरी एटलास में काहे कि कोहे के एटलास नै कि सबले पाठ पढिबो खाली देखो खाली पाठ पढिबा करबा सेटा नो केते जिंसटा को तमे बाय हार्टली लर्निंग करछो दैट इज मोर इंपोर्टेंट राइट आ एटा भी केबे भी कहबिनी कि खाली केवल सुनी देले हबो नो साइड रे लिखिया को पडियो सो दैट इज एन प्रॉपर वे ऑफ लर्निंग राइट जोटा कि तुमको सिविल सर्विस रे बहुत इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दैट वन दैट्स एन डिसिप्लिन आल्सो तो एटी देखो क्रैटर एटीला क्रैटर इज द ओपनिंग माउथ क्रैटर मींस योर ओपनिंग माउथ एटी क्रैटर इज योर ओपनिंग माउथ राइट ओपनिंग माउथ एटा को हाजे ओपनिंग माउथ ता जो बाटो तमरो magma टा एस्केप करछि बाहर को राइट नेक्स्ट देखो एटी this is an vent or pipe this is जो पाइप रे जोटा कहवा जे पाइप और कंडुइट तक भी कहवा जे वेंट पाइप और कंडुइट अच्छा आगु जिबा so this is how a magma comes out जोटा कि कहली कि in a nutshell when there is an force applied from the in the beneath of the earth तळु सेतले कोन हुए फ्रैक्चर और रप्चर हुए अर्थ प्लेट रे तो सेही बटु जो गैप टा हुए magma escape करे एठी मु कहली magma finds a way to escape outside माने बाहर को आसिया पे हैला ए जगह टा मु कहली एठी ठीक अछि then when it comes outside this magma comes known as your magma known as your lava okay agu jiba puni eta mu कहली this is a vent or main pipe or this is also called as your conduit ठीक अछि परीक्षा रे पचार चंदी केमती कलम ए कलम बी करी माने पचार चंदी तमे केमती ताकू माने वाइल मैचिंग हैला जियोमॉर्फोलॉजी रे इथरा जम देखो ओसीएस से बहुत सारा क्वेश्चन पचातला एटलीस्ट फिजिकल ज्योग्राफी मु देखुची मैक्सिमम जदी हमें देखिबा खाली फिजिकल ज्योग्राफी रो दुटा तीनटा पचार चंदी जदी हमें टोटल देखिबा माने इंडिया रो फिजिकल मिसे की देन इट माय गुडनेस कम्स अराउंड 6 प्लस क्वेश्चंस हमरा आसीची हैला 6 प्लस क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आले सो दीस आर बेसिकली वेरी फंडामेंटल तुम जदी एठी बुझुचो इट विल हेल्प यू आल्सो इन मेंस आल्सो राइट माने मेंस राइटिंग रे भी तुमको हेल्प रहइबो एठी देखिबा कि अर्थ रो हमें जदी देखिबा परे देन गोटे जनरली गोटे डिस्कशंस আছে कि केते टाइप रो वोल्केनो अछि हला जदी एठी देखिबा कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो जदी मैं लिखिबी एठी टाइप्स ऑफ वोल्केनो एठी लिखि दोची केते टाइप रो डिस्कशन करबा टाइप्स ऑफ वोल्केनो जनरली 3 टाइप्स वन जनरली योर 3 टाइप्स रो वोल्केनो थाय राइट जनरली 3 टाइप्स रो कौन वन इज योर एक्टिव वोल्केनो 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो active volcano then your dormant volcano active dormant volcano then your extinct volcano ei tini type ro thai active dormant and extinct मन रखो एक्टिव डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट
So active volcano कौन हुए? There is a frequent of eruption, frequently eruption हुए. एटी गोटे गोटे लाइन मु लिखुची कौन? Frequent eruption, frequently erupted. ठीक अछि? Frequently erupted. किए तारा एग्जांपल कौन दे परिबा? किए एग्जांपल हबो? जेमते एग्जांपल ले आमे दे परिबा कि योर मोना लोआ हला मोना लोआ कोठी हावाई रे अछि. फुजियामा ठीक अछि. फुजियामा जापान, फुजियामा हला कोठी जापान रे. देन स्ट्रम्बोली हला किछ अल्प एग्जांपल दोछि. स्ट्रम्बोली इन इटली रे अछि हला मेडिटेरियन सी रे. डर्म एटा बुझी हला सब जिंस हला. स्ट्रम्बोली मु कहले फ्रीक्वेंटली इरप्टेड मोना लोआ इज इन हावाई सब देखिबी को जगह जहां जगह होइछि. देन फुजियामा इज इन जापान. Then your Stromboli, it is in Italy. So these are believed to be very active volcano, very fairly fairly erupted माने frequently erupted माने कि सेमाने प्राय तो सब बड़े माने we can say the gap of eruption, your volcanic eruptions जो magma जो बाहरुची लाभा जो बाहरुची सेटा हला very frequently, maybe सब दिन, maybe प्रति सप्ताह रे और maybe दिने छाड़ी दिने. Okay, so that is the fair frequently कहा जाए माने प्राय कम ड्यूरेशन में बाहर. डॉर्मेंट माने yes, it has erupted in the recent past, in the recent past, and maybe the chances of eruption again. एटा को डॉर्मेंट कहा जाए माने एटा पास्ट रे हेइथिला हला इरप्ट हेइथिला वर्तमान बहुत दिन हला सेटा रही जाईची. बट देयर इज अ चांसेस ऑफ इरप्शंस माने गोटे गैप रुवे मे बी 10 वर्ष मे बी 20 वर्ष मे बी 5 वर्ष. तो एटा गोटे फ्रीक्वेंटली हुए. ओके एग्जांपल के दबा हम इंडिया रे अछि. एग्जांपल जदी दबा कि हमरो इट इज योर बैरन आइलैंड इन अंडमान्स हला. बैरन आइलैंड इन अंडमान्स रे अछि. ठीक अछि. अंडमान एंड निकोबार ठीक अछि. अंडमान एंड निकोबार हमरो अछि बैरन आइलैंड. Right? Next, extinct volcano basically not erupted in historic ages or time जहाँ भी लिखा, but placed on a active fault line. एक्टिव फॉल्ट लाइन मन रख ता माने केबे बेटा इरप्ट हेनी बट देयर इज ए चांसेस ऑफ इरप्शंस. जेमते एग्जांपल्स मु कहि परिबी गोटे एग्जांपल ए टाइप रो एक्सटिंक्ट वोल्केनो इट वाज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट बट इट वाज नॉट एक्सटिंक्ट. दैट इज काकाटावा वोल्केनो इन इंडोनेशिया हला. बट आज के डेट द एक्सटिंक्ट कहबे जोटा चांसेस अछि कि हबो माउंट केनिया हला. माउंट केनिया इन अफ्रीका रिफ्ट वैली. अफ्रीकन रिफ्ट वैली सो नोट करनियो वेरी इंपोर्टेंट हला. अफ्रीकन रिफ्ट वैली and Mount Kilimanjaro is also same. Kilimanjaro Tanzania pakare Kilimanjaro also in the African Rift Valley same jinsa. So there is a probability of that extinction jota ki hei paribo means I mean in future as per geologists there is a chances of eruptions. So these are the basis of your types of volcano. So let us know good example mu dekhebi bartaman देखो प्राय तो जदि हमें देखिबा एक्टिव वोल्केनो से माने एई जगह रे प्राय तो बहुत रही थांती. ठीक अछि. माने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज द मेजर वेयर दिस योर वोल्केनिक फेनोमेना टेक्स प्लेस. तो जे कि वर्ल्ड रो 80% मोर देन 80% वोल्केनो इज लोकेटेड हियर एई जगह हला. 80% मोर देन 80% volcanoes हला volcanoes placed here एई जगह रे ही मोर देन 80% ऑफ योर वोल्केनो प्लेस्ड हियर एई जगह ही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रे थाय मोर देन 80%. ता माने कोन वर्ल्ड रे अलगा जगह नाही बिल्कुल अछि अलगा जगह देखिबा सो. नेक्स्ट जस्ट लुक एट हियर ता पूर्वरु मु देखौ छी दिस इज जस्ट द ब्यूटीफुल इन स्ट्रम्बोली. जस्ट लुक एट हियर द ब्यूटीफुल स्ट्रम्बोली ऊपर जस्ट हमें अभी आउट के पूर्व डिस्कस दिस एन एक्टिव वोल्केनो. दिस इज प्लेस्ड इन इन योर नियर टू द इटली कोस्ट हला. मेडिटेरियन सी रे जो टेरिहेनियन सी अछि सेही पाखरे. टेरिहेनियन सी इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेरियन सी राइट. जस्ट लुक एट
Stromboli. This is the beautiful Stromboli. Many times it erupt हुए, major times erupt हुए. Stromboli क्या मैं कही परिवा? Stromboli is your right. Stromboli क्या मैं कौन कही परिवा? Stromboli is the lighthouse of आपको कौन कहा जाए? The lighthouse of Mediterranean Sea. The lighthouse of Mediterranean Sea. The lighthouse of Mediterranean Sea. This is called the lighthouse of Mediterranean Sea. Stromboli. It looks so beautiful, I think, right? Next, ना पूर्व देखियो आज मु जोड़ा कही थली कि को जगह Stromboli is, look at here. Stromboli is here. Just look at here. Stromboli. तो देखियो this is Italy. এই জায়গায় Stromboli. ठीक আছে? This is Stromboli. अच्छा, एठी जदि हमें देखिबा again कि Pacific Ring of Fire हमें देखिले. This is your Pacific Ring of Fire. This is your Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire. एठी रहला Pacific Ring of Fire. This is the place. Pacific Ring of Fire. Right? तापरे सेकंड हमें कोड देखले वर्ल्ड रो ए जदि 80% रहला आउ किछि जिंस कोआ जाय कि you are near about 10 to 15% एई जगह रे रहे 15% near about your alpine Mediterranean plate माने कोठू ए Mediterranean sea पाकर नै कि till हमरो ए पर्यंत alpine Mediterranean plate ताको कोहा जाय सेकंड प्लेस ताल गोटे हला को डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक जोन जदि देखिबा डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक जोन distribution जेंति हमें पढिथिला earthquake रे सेंति discrete distributions of volcano कोठी गोटे हला Pacific Ring of Fire Pacific Ring of Fire हला गोटे हला सेकंड हला Alpine Mediterranean बेल्ट माने जोटा कि हिमालय को क्रॉस करके टिल कोटू स्पेन पाखरु नै कि टिल एटा आसी को पर्यंत स्पेन रु नै कि टिल हियर स्पेन रु नै कि टिल आसी कोठी म्यांमार पर्यंत दिस इज योर म्यांमार पर्यंत ए पर्यंत आसी राइट दिस इज अ लॉन्ग बहुत बड़ कवरेज करछ म्यांमार पर्यंत आसी राइट सो इथरे रहउची तमर इटली मेजर इटली टर्की ग्रीस ए एरिया रे तमर रहउची हैला मोर देन तो एठी हम कोन लिखले नोट करनबो ए जगह रहला मोर देन 80% ठीक अछि मोर देन 80% एठी रहला देन ए जगह रहला 10 to 15% और बाकी रहला इटी योर African Rift Valley हला African Rift Valley को जाय कि माने देयर इज अ चांसेस ऑफ 0 to 5% हला स्टिल इट इज ऑन द प्लेट एक्सटिंक्ट टाइप रो कैटेगरी इथरे आसुची हला जस्ट रिमेंबर दिस वन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जदि तुमको सेग्रीगेशन पचाला हाउ यू प्रेजेंट दैट इज मोर इंपोर्टेंट केमति तुम प्रेजेंट करछो दैट इज मोर इंपोर्टेंट राइट सो इथे हम जानले टाइप्स ऑफ वोल्केनो रे हम देखले कि वन इज योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इथे हम देखले पैसिफिक रिंग ऑफ फायर राइट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर व्हिच एंटायरली engulfs from starting from your New Zealand to Chile एते बडो गोटे कवर करछि आ वर्ल्ड रे 80% ऑफ वोल्केनो तमे एई जगह ही पाइबो नेक्स्ट तमे देखलो सेकंड स्पेन पाखरु मेडिटेरियन सी स्पेन पाखरु नेकी टिल म्यांमार पर्यंत आसी एंड लकीली इंडिया ऊपर नाही मींस आई मीन हिमालय ऊपर जदी हिमालय गोटे बेल्ट अछि बट नाही पर्यंत हेनी थैंक गॉड हेनी पर्यंत हला कि ए रिसेंट पास्ट भी हबार सेमति किछि चांसेस नाही बट इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल बट यस अंडमान निकोबार्स रे एठी हमर अछि ठीक अछि दिस इज योर जदी हम देखिबा अंडमान निकोबार्स रे दिस इज योर अंडमान्स हला अंडमान्स रे भी अछि हमर जोटा कि बैरन आइलैंड मु कहले दिस इज योर बैरन आइलैंड ए जगह हमर डॉर्मेंट वोल्केनो अछि एंड आई थिंक 2018 अक्टोबर रे इरप्ट हेतिला ता परे पुनी 2021 22 रे भी हेतिला हला सो दिस इज नॉट very जदि देखिबो कि ने पॉज रे हुए दैट इज व्हाई द जियोलॉजिस्ट हैज केप्ट द बैरन आइलैंड in the category of dormant right African next एटा गला थर्ड रे में आसीबो African Rift Valley right African Rift Valley believed to be very 0 to 5% very less chances of eruption African Rift Valley is here it's starting from your Malawi to and extend to it hela Lake Malawi हला मन रखो मोजाम्बिक पाखरे अछि गोटे Malawi lake एटु तमरो Rift Valley start हिची and it extend to the Dead Sea of Israel right this is your Israel ए जगह ठीक अछि ए जगह तमर जिवो हला Dead Sea Israel पाखरे it your Israel your Dead Sea पर्यंत एक्सटेंड हिची कोटा Rift Valley तो वर्तमान जेहेतु अफ्रीका Rift Valley गोटे टियर अपार्ट हेई जाईची
तो अफ्रिकन रिफ्ट वैली ऊपर मु किछि क्लास नेबी मझरे मझरे माने कहबी आ परे परे ठीक अछि तो सेइथरे मु कहबी अफ्रिकन रिफ्ट वैली केमति क्रिएट होछि डायग्राम सीज एक्सप्लेनेशन द वेरी बेसिक्स लाइक तुम डायग्रामेटिकली तुम क्लियर हो इंपोर्टेंस जानो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट वर्तमान बहुत सारा माने बढ़ुछि यार इंपोर्टेंस बिकॉज ऑफ योर गवर्नमेंट रो गोटे ब्यूरोक्रेट्स माने गोटे ब्यूरोक्रेट्स को जानिबार दरकार कि कोन होछि देशर इवन इफ दे पंच दिस क्वेश्चंस इन योर जनरल माने करंट अफेयर्स सहित भी से दौरान क्वेश्चंस खोल देख यूपीएससी क्वेश्चन देख ओसीएस क्वेश्चन देख ओडिसा है ओपीएससी सब जगह सेम जिन पैटर्न से फॉलो कर सो इट इज सेग्रीगेशन सब देखले 10 to and 0 to 5% दिस इज ऑल टोटल है तो अच्छा या परे मु कहबी कि दिस आर द ठीक जियोलॉजिकल सेग्रीगेशन वर्तमान किछ दिन तळ कथा कहबी आइसलैंड रे बहुत बड़ गोटे वॉल्केनिक इरप्शंस हेतला माने आई मीन माने इफ आई कम बैक टू द दिस सेप्टेम्बर मंथ हैला 1 month or 2 months back there is a suddenly rupture आइलैंड रो लोक माने बसचंती तांकर यू नो रेक्जाविक इज द कैपिटल दिस वन इज योर आइलैंड ठीक अछि आइसलैंड दिस इज योर आइसलैंड कंट्री मन देखि सुनो मु कोन कहूछ आइसलैंड रो कैपिटल रेक्जाविक दे हठात किना समान देखले द कोस्टल टाउन्स पीपल दे सॉ सडनली देयर इज अ रप्चर इन द देयर नियर बाय होम देयर कोस्टल एरिया रे और वोल्केनिक इरप्शंस हला आइसलैंड गवर्नमेंट हैज थॉट टू शट डाउन द एंटायर मींस एट द कोस्टल टाउन यस बिकॉज ऑफ दिस इरप्शन सेठी केमती आसिला तमे देखो यार जदी मु देखिबी जस्ट लुक एट द पिक्चर हियर दिस देखो Iceland volcanic this was the Iceland volcanic eruption से थिला हैला this is the coastal town of Iceland एटी देखिली coastal town हैला volcanic eruption लिखली volcanic eruption in coastal town of Iceland हैला आइसलैंड रे एटा हेतला एटी देखो कोन देखु सेटी दिस इज एन आइसलैंड केमती हमें देखिबा एक्चुअली कोन इच आर्कटिक प्लेट पाखरे आर्कटिक प्लेट पाखरे कोन इच देयर इज एन यू नो देयर इज एन फॉल्ट लाइन एई जगह देखो मैप रे मु देखै छी दिस इज एन आइसलैंड आर्कटिक जगह रे कोन रहउची देयर इज एन फॉल्ट इन द फॉल्ट लाइन एई जगह तमर फॉल्ट लाइन अछि ठीक अछि एई प्लेट पाखरे माने अटलांटिक प्लेट fault line हैला fault line ए पाखरे fault line in Atlantic plate near to Iceland that is the major cause काहे कि आइसलैंड रे वर्तमान माने इट इज बिलीव दैट वर्तमान जियोलॉजिस्ट माने एटा भाबुचंती कि आइसलैंड रे जो टाइप रे एटे होउची हैला माने हठात किना तंकर पूरा रास्ता फाड़ी हे कि पळेला पूरा माने इट स्ट्रेचेस विद इन सम फ्यू मिनिट्स it stretches miles of kilometer that tear apart the roads and highways in Iceland. Reykjavik पाखरे सेटा Reykjavik is the capital of Iceland. So ए वर्तमान मोर कहबार रीजन हला कि जदी हम मुइना डिस्कस करले कि नहीं पैसिफिक 80% एठी वोल्केनिक एपटे तो बिल्कुल भी नहीं आ आइसलैंड हला एई जगह रे दिस इज द आइसलैंड जदी तुम देखियो आइसलैंड इज हियर देन इट हाउ वर्तमान कहबो कि सर आइटा किंतु पॉसिबल हला यस देयर इज अ फॉल्ट लाइन जेहेतु magma भितर बुल्लुचंती so it can be happened with at any time anywhere right it is so unpredictable but it's a very slow phenomenon but एई जगह रे कोन अछि जेहेतु समान एक्टिव एई जगह रे हे जोटा कि आइसलैंड कथा कहली now it is a major concern in the islandic nations also the world community is united to help the Iceland also because वर्तमान सस्पेक्ट करह जदी एई टाइप रो चले Iceland country maybe in few decades or few years maybe 10 years or 15 years भितरे completely माने uninhabitable position को पळे आसे लोक के रही परिबेन because of this volcanic phenomenon and it's true हैला so वर्तमान देखिबा आगु को आइसलैंड देखिला आइसलैंड केमते वोल्केनिक कंट्री हाउ इट इज यू नो अनफेवरेबल टू लिव दैट वन दैट इज इट जानि के रखो कि वोल्केनिक फेनोमेना कि केते को टाइम रे भी हे पारे एंड थैंक गॉड इंडिया ऊपर किछि नाही एंड थैंक्स टू आवर हिमालय इट प्रोटेक्ट्स अस जनरली एक तो चिलिंग विंड प्लस वोल्केनिक फेनोमेना को अलाउ भी करूनी आज ऑफ नाउ भगवान करन तो चालू लक्ष वर्ष होजी ओके सो वर्तमान या पूर्व देखिबा आ गोटे नुवा जिंस आज मु तुमको कहबी कि ए जो लाभा ए लाभाटा केते प्रकार लाभा वी कैन से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाभा जनरली एट मु कोन कहबी टाइप्स ऑफ लाभा इट लिखुची टाइप्स ऑफ लाभा
है टाइप्स ऑफ लावा जनरली दी टाइप रो लावा थाए वन इज योर बेसिक लावा अनदर इज योर एसिडिक लावा दी टाइप रो लावा थाए वन इज योर एसिडिक वन इज योर बेसिक प्रथम देखिए बेसिक लावा एंड सेकंड वन इज योर एसिडिक लावा मन रख नोट करनिया है एंड एसिडिक लावा there are basically two types of lava one is your basic lava another is your acidic lava just look at here diagram of the basic lava एटी कोन देखले बेसिक लावा हम पढिबा एटी बेसिक लावा अच्छा एटी हम देखली कि एटी टिके कटि जाईची जस्ट एटी देखो माने देखाउनी एटी लिखा होची कि डोम शेप्ड और सील्ड फ्लैटेन टाइप माउथ डोम शेप्ड और सील्ड फ्लैटेन टाइप माउथ बेसिक लावा रे बेसिकली कोन हुए सिलिका परसेंटेज टिके माने बहलिया कम थाए लेस सिलिका परसेंटेज काहे कि लेस एटी लेस विस्कस देखिए देखो को पॉइंट हो लेस विस्कस ड्यू टू लेस सिलिका प्रेजेंट सिलिका माने सिलिकन लेस सिलिकन प्रेजेंस हैला प्रेजेंस इन द लावा तो से जो कौन हुए द रीजन तारा स्पीड हैला इज स्पीड इज हायर देन एसिडिक लावा जोड़ा कि बहलिया देन एसिडिक लावा परीक्षा रे पचाले खाली एडा बेसिक जिंस ओडा एति मन रखथियो एसिडिक लावा एंड फ्लैटेंड डोम शेप मन रख फ्लैटेंड डोम शेप से ठंडा हले केमते नबो फ्लैटेंड डोम शेप ए तीनटा पॉइंट ऊपर ही क्वेश्चन से माने पचारंती द वेरी नेचर ऑफ योर बेसिक लावा प्रथम जिंस कोन होबो इट इज फ्लूइड लेस विस्कस माने फ्लूइडी नेचर फ्लूइडी टाइप रो इट इज बिकॉज ऑफ दैट इट इज काहे कि लेस सिलिकॉन प्रेजेंट सिलिकॉन बाय नेचर इट टिके बहलिया ठीक अछि सिलिकॉन प्रेजेंस ऑफ योर लावा प्रेजेंस इन लावा ड्यू टू द लेस सिलिकॉन ठीक अछि ड्यू टू योर लेस सिलिका प्रेजेंट सिलिकॉन और सिलिका व्हाटएवर ला लेस सिलिकॉन प्रेजेंट तो से जो कोन हुए तार स्पीड ता बहलिया जेतु विस्कस लेस विस्कस सिंस इट इज लेस विस्कस सो व्हाट हैपेंस लेस विस्कस जो कोन हुए सेटा तार स्पीड ता बढ़ी जाए तार स्पीड इज मोर स्पीड इज हायर देन द एसिडिक लावा से जो कोन हुए फ्लैटेंड डोम शेप दिस इज फ्लैटेंड डोम शेप रो सेम थिंग एटी जदि तमे देखियो नेक्स्ट एसिडिक लावा रे कोन होची व्हाट डू यू मीन बाय द एसिडिक लावा रे जदि तमे देखुछो इट इज मोर स्टिपर हैला एसिडिक लावा रे कोन देखिबा एसिडिक लावा रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक लावा हैला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडिक लावा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड लावा रे कौन हुए ड्यू टू more presence of silica or silicon जहाँ भी silica है it is highly viscous है माने गॉडी पर बहुत slow speed hence slow motion of lava hence slow motion of lava टा स्पीड स्लो करे स्लो मोशन और स्लो स्पीड तो इट कौन हुए योर कोनिकल शेप बेसिकली इट इज योर कोनिकल शेप राइट इट इज योर कोनिकल शेप हैला कोनिकल शेप नी हैला व्हेन लावा accumulated दिस इज द बेसिक जिंस हम कोच कोनिकल शेप श्रीमंत बारिक सर एक्टिव वोल्केनो बुझी पाले अच्छा एक्टिव वोल्केनो बुझबे ठीक अछि मु कहूची श्रीमंत मु कहूची सर ठीक है रिपीट कर बिल्कुल आई विल कम बैक श्रीकांत ओके योर श्रीमंत ओके आई विल कम बैक सो दिस इज योर एसिडिक लावा हमें देखिले कैरेक्टरिस्टिक्स कोन देखले सिलिका हाईली विस्कस हेंस लेस मोशन से जो कोन हुए तार स्टिप तार जदि हमें देखिबा कि इट इज कोनिकल शेप एठी हुए छी तो बेसिक जिंस तमे एठी बुझो कि एसिडिक बेसिक रे हला तमरो लावा रे सिलिकॉन बेसी प्रेजेंट थाए खाली एटा प्रीलिम्स रे क्वेश्चन जसले एम अटेंड करो मेंस रे भी पॉइंट गुडा लिखि परियो तम हैला ऑप्शनल पेपर हो कि जीएस पेपर हो हैला से जे एआर डोम शेप ता मोटा डोम शेप रो ये जेहेतु तोर कोनिकल माने लेस अछि तो इट इज स्टिप हबो दैट इज कोनिकल दिस वन कोथरे एसिडिक लावा रे अच्छा वर्तमान श्रीमंत पचाउछि कि सर मते एक्टिव वोल्केनो टिके बुझेलानी देखा श्रीमंत एक्टिव वोल्केनो जदि हमें देखिबा एक्टिव वोल्केनो फेयरली फ्रीक्वेंटली इरप्टेड हुए बहुत जगह कोन हुए फ्रीक्वेंटली देयर इज एन इरप्शन ठीक अछि श्रीमंत पचाउछि फ्रीक्वेंटली देयर इज इरप्शन एटम कोन लिखिली आउ थरे
frequently eruptions, frequently erupted माने magma जो बाहर लाभा बाहर बहुत frequently सेटा बाहर ठीक अछि एग्जांपल कोटी मोना लवा हवाई फुजियामा और स्ट्रम्बोली अच्छा एक्टिव वोल्केनो कोड जगह हुए मेनली सबडक्शन जोन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो तुम देखुछ दिस इज एन सबडक्शन जोन माने ए जगह कोन होबो प्लेट्स दिस इज एन सबडक्शन जोन सबडक्शन जोन रे कोन हुए प्लेट्स ओके प्लेट्स राइट्स ओवर ईच अदर ए जगह गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट ऊपर चढ़ी जाए प्लेट्स रजड इधर एमती दिस इज द कंडीशन जस्ट लुक एट हियर दिस इज द बेंड डाउन हियर गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट कोन होची चढ़ी जाउची तापर दिस इज द प्लेट्स राइड ओवर दिस इज वन प्लेट एंड दिस इज प्लेट 2 गोटे प्लेट सेकंड प्लेट 2 एटा हला सबडक्शन जोन एटी समर प्लेट ब्रेकिंग प्लेट दिस इज द ब्रेकिंग प्लेट ब्रेक्स हला दिस इज द प्लेट ब्रेक्स पैसिफिक रे ए जगह होची दिस इज योर सबडक्शन जोन हला जोडा की बेनिफ जोन भी कहंती this is the clear picture now it is okay Srimant is it okay now is it okay Srimant हला पैसिफिक रे गोटे प्लेट आ गोटे प्लेट ऊपर चढ़ी होची से जुगो एई जगह रे ए काहे की एठी अछि तमरो के एपड अछि तमरो पैसिफिक प्लेट मन रखो दिस इज योर पैसिफिक प्लेट एई जगह की अछि एपटे दिस इज योर एशिया प्लेट इधर पे एशिया प्लेट है हियर इट इज अगेन दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका प्लेट and this is your South America plate so these are the plates Pacific plates has जो it makes an जो subduction होची एपड जदि हम देखियो वेस्ट पटे एशियाटिक प्लेट रे और ईस्ट पटे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट संगे ओके थैंक यू श्रीमान थैंक यू तो एटा हम देखले तो स्ट्रम्बोली ऊपर भी कहले एठी भी मेडिटेरियन सी पाखरे दिस इज नियर योर मेडिटेरेनियन सी पाखरे दिस इज योर स्ट्रम्बोली हैला कोहा जाय इट्स अ लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी राइट सो वर्तमान पढिले एगुडा हैला आइसलैंड ऊपर भी हम जानले बेसिक लाभा एसिडिक लाभा ऊपर क्वेश्चंस आसुची देखिनो यूपीएससी रे राइट दिस इज आल्सो so thank you all of you again we'll meet पुनी ट्यूसडे दिन पुनी देखा हबो विथ पीआरक्यूज देके आसी सप्ताह रे एटा रहिबा गोटे रिलीजियसली करबा वी शुड नो द सिविल सर्विस रे मेनली ट्रिक्स मैटर करे पढिया को पडिबो बेसिक जिंस आ अगेन म कहबो ओडिसा सिविल तरफ रो हमरो ऑलरेडी ऑफलाइन बैचेस जीएस रो भी आरंभ होई छै वर्ष ज्योग्राफी ऑप्शनल सुनिए दैट इज आल्सो स्टार्टेड जोटा कि प्रति वर्ष रोची ऑफलाइन ऑनलाइन दिदांग अछि हला जीएस भी स्टार्ट हेज ऑफलाइन प्लस टेस्ट सीरीज मेंस रो ऑलरेडी सेकंड माने टुमारो ऑनवर्ड्स स्टार्ट होची जीएस रो हला एनीवन इंटरेस्टेड जो भी क्वेरीज में प्लीज लेट मी कांटेक्ट व्हाट्सएप करि परिबो 7978090972 also you can WhatsApp also this is also WhatsApp call and WhatsApp data call and WhatsApp also okay I'm always available for my students any queries thank you so much everyone thank you so much have a good day thank you so much thank you everyone anything to ask let me know good morning sir why does acha Adlof is asking sir why does basaltic lava have a higher temperature than the acidic lava okay ठीक अछि okay वर्तमान जदि हमें देखिबा कि Adlof पचार काहे कि your basic lava has a higher temperature than the acidic lava okay let me know that one देखो acidic lava generally हमें देखिबो acidic lava बहुत slowly बाहर को बाहर ठीक अछि बहुत स्लोली बाहर को बाहर बिकॉज ऑफ योर टाइप तो बेसिक डिफरेंस इज द तार मुहटा बहुत छोटो थाए एसिडिक लाभा रे प्रथम हम उल्टाटा कहले सीधा बुझियो एसिडिक लाभा रे कोन हुए दिस माउथ इज ओके conduit pipe is there in the mouth of acidic lava is squeeze in compared to basic lava तो आमे मापुचंदी केते बळे इनसाइड रे मापुने आउटसाइड रे मापुचंदी लाभा रे टेंपरेचर टा बट बेसिक लाभा रे कोन हो ये एकदम बर्स्ट करी के बाहर को आसियो एंड लाभा रे कोन वे बेसिक लाभा रे टेंपरेचर जदी तमे देखिबो इट इज मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस फॉर योर इंफॉर्मेशन 2000 डिग्री सेल्सियस मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस माय गुडनेस बट एसिडिक लाभा रे कोन होची ये धीरे धीरे बाहरची जो धीरे धीरे बाहरची कोन होची इट कम्स
it comes directly in the atmospheric contact माने जेहेतु धीरे धीरे आसी जेहेतु bulky matter रे नुह धीरे धीरे आसी atmospheric contact रे आसी से कोन होची टेम्परेचर द्वारा लेसन हे होची आ सबुठ बड़ जिंस विस्कस से काफी विस्कस अछि बट एठी कोन अछि एटा हला लेस विस्कस atmospheric contact रे ये भी आसी किंतु क्वांटम ऑफ जो आसुची फ्लूइड टा एठी बेसी अछि से जो कोन होची जो मापु जंती माने वेयर वी मेजर द टेम्परेचर इट इज क्वाइट noticeable but it is in case why it is erupt it will likhi douchi it erupts magma erupts very quietly hela eti kon likhibi magma erupts very quietly erupts very quietly ठीक अछि quietly and not sufficient enough to retain the temperature. I hope it is clear now. ठीक अछि? Is it okay? Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. ठीक अछि? We'll again meet. Thank you so much. Anything to ask? Okay. Thank you so much. Thank you everyone. Right? Okay. Thank you all of you. We'll meet again on Tuesday. Thank you so much. Thank you everyone. Have a good day. Nice day. Thank you all of you. Thank you.